So hey guys, it's Rahul and this is Jui here and welcome back to my channel which is Design Lifestyle. So Hello yeah guys. we have come up with a new topic. As you know, in our earlier video I have mentioned that like from this video मैं अपना thesis project show करूँगा. So yeah guys, it's gonna start. So in this video I'm gonna share my thesis stuff like. So yeah guys, so first of all like सबके mind में आता है what is thesis? Thesis होता क्या है? Thesis means nothing but a detailed research of any topic if you're taking. So ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जस्ट उठाया एंड 2-3 स्लाइड्स आपने रिसर्च पढ़े एंड आपने कर दिया. नो गाइस, इट्स लाइक होल ईयर, इट्स योर फाइनल ईयर स्टफ विच यू आर लाइक वर्किंग ऑन इट. लाइक आपने 3 साल मेहनत किया, यू नो ऑल द प्रोसेस एंड ऑल दो स्टफ्स एंड नाउ इट्स इन टाइम यू हैव टेकन अ सम टॉपिक एंड यू डिड अ डिटेल रिसर्च ऑन दैट. डिटेल मीन्स उसका एवरीथिंग फ्रॉम A to Z you should know. Like if anyone asks you about something related that मतलब कि आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ you know the answers as well. So thesis मतलब nothing but a semester exam है, final semester exam जहाँ पे हम अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं. वो भी 4 years, जो इतनी हमने मेहनत करी है 4 years, तो उसका जो फाइनल ईयर में हम you know हमारा पूरा रिसर्च वर्क, द होल ईयर रिसर्च वर्क एंड द होल ईयर so much of hard work we have did, तो वो हमारा फाइनल रिफ्लेक्ट होगा हमारा काम में कि हमने क्या रिसर्च किया है, क्या काम किया है, क्या सीखा हमने इतने दिन. तो दैट्स थीसिस. So as you know guys, like आपने मेरे प्रोजेक्ट्स तो देखे ही होंगे and my basically all projects was related to LGBT कहीं ना कहीं like unisex and all like वो सब टॉपिक्स आते हैं. and yes, तो इसके प्रोजेक्ट्स में हमेशा आपने एक चीज़ देखा होगा कि नो यूनिसेक्स जैकेट्स, हमेशा यूनिसेक्सुअलिटी रहता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उनके बीच कुछ भी. तो वही कहीं ना कहीं हमने जो इसने जो टॉपिक चूज किया था अबाउट आइडेंटिटी फर्स्ट ईयर में, हमने उसी चीज़ को कंटिन्यू किया है यहाँ पे भी. तो कहीं ना कहीं वो 40 हो सकता है. हम जो फर्स्ट सोचते हैं दिमाग में और वही सोच को हम अगर कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा फाइनल ईयर में, तो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि हम उसमें कुछ बेस्ट कर सकते हैं. तो यही आपका सोच रहना चाहिए कि अगर वो फर्स्ट डे से आप कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे हो कि हमें इस चीज़ के लिए कुछ करना चाहिए, वेदर इट इज़ हेल्थ टॉपिक, अगर आप रोबोटिक्स के बारे में भी सोच रहे हो, तो योर टॉपिक शुड बी लाइक दैट ओनली, रिलेटेड टू दैट ओनली, क्योंकि आपको पता है कि आप उसमें बेस्ट कर सकते हैं. Yeah guys, because you have worked on it, you have did research. Like आप जहाँ पे 4 year में जाके एक different topic लोगे, और else you have worked all 3 years like उस particular topic में and you know that stuff, you can give it your like 101% on your thesis. So वो चीज़ आप अपने mind में रखो and just give your 100% on that, because that's you. Like people will know that you did an amazing job in your thesis stuff, because at the end उसको देख के like in future you will get your jobs and all that stuff कि how creative you are. And one more point कि हम ऐसे हमेशा सोचते हैं how can be transgender can be a thesis project. हम लोग फाइनल थीसिस प्रोजेक्ट में अगर हम लोग ले रहे हैं यू नो ट्रांसजेंडर, या मैंने अभी एक एग्जांपल दिया रोबोटिक्स, how can we can make something out of it, हम लोग ऐसे ही सोचेंगे पहले. बट हमें उसी के ऊपर रिसर्च करना है, देखना है what all trends, what all things you can you know create. हमें क्रिएट करना है. बेसिकली हम फैशन डिज़ाइनर्स का यही काम है कि हम कुछ न्यू क्रिएट करें. रोबोटिक्स यानी सिर्फ रोबोट बनाना नहीं हो जाता, हम ड्रेस में क्या what all things we can add कि वो चीज़ लगे, रिलेट करे with a new thought. Yes, that's the thing. आपका thought strong होना चाहिए. like whatever you are like thinking, your whatever perspective should be clear and crisp. like वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही यू नो क्लियर होना चाहिए आपका पर्सपेक्टिव, और उसका एग्जीक्यूशन should be you know very clear कि कल को if you doing thesis there will be a question which will come to you in future. obviously वहाँ पे कॉन्फ्रेंस होगा, आपने आपको पूछा जाएगा कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज किया है, क्या रिलेट कर सकते हो आप कैसे. अगर मैंने ट्रांसजेंडर लिया है, मुझे एक
पॉइंट, एक लाइन होता है जिसमें हम क्रॉस नहीं कर सकते, एक लाइन होता है जिसमें हम हाँ टॉपिक कि हम किसी और जेंडर के ऊपर बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिस इज़ नॉट डन। अगर हम उनके बारे में कुछ भी बात कर रहे हैं और कुछ भी गलत बोल रहे हैं, तो इट्स मतलब इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनको डिसरेस्पेक्ट कहीं से भी ना करें। So let's start with my thesis. Yeah, with the topic. So you guys, my topic was the iconic. So guys, आप नाम सुन के what should I say? You can feel it. Yes. The iconic. I think the iconic, बनता है उनके लिए. They are iconic. Why we always think कि हम फालतू नाम से उनको पुकारते हैं. I think they have that much, they are eye-catching, they are attractive कि हम कहीं भी जाए, मतलब कि फटाक से उनके पास हमारा नजर जाता है, मतलब they are something. They are so eye-catching. They are something. तो क्यों ना हमने सोचा क्यों ना हम ऐसा टॉपिक रखें जो obviously they are iconic. They iconic. और हमने यही सोच के ये हमारा टॉपिक रखा, एंड आई थिंक इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता. So you guys, introduction about Hijra community, as you know, about their stuff, how they have come in this Hinduism. उनको हम लोग कैसे जानते हैं. हम जो बचपन से सुनते आए हैं, हिजड़ा, किन्नर, ये सारे शब्द जो बहुत ही बेकार है और बहुत ही नहीं यूज़ करने चाहिए हमें. उस वक्त हमें पता नहीं था, और हमें पता ही उस हिस्ट्री ही नहीं पता थी उस चीज़ की. क्यों हम डरते हैं, हम वो आ जाए तो हमें डर लग जाता है. बट आई डोंट थिंक that was what should I say? और हम उनके सोसाइटी में गए हैं, कम्युनिटी में गए हैं, उनकी mentality से मिले हैं, that they are very friendly. Because it was I just want to tell you that it was mentality that what our society have told us about them and all. Obviously. Because after studying this, we just got to know, no, it's nothing about that, nothing we have to fear about, because they are human. Obviously, they are human. They are very nice people. They are very friendly. Yes. Very caring. Yeah, they are very caring about each other, because they are staying without their families and all. They are just creating their community and all, and they are very affectionate with each other. If something got happen, there are 10 people, they just come together and they just help. So that's the thing what I have seen. I think कि हम जब उनके सोसाइटी में जाते हैं, जैसे हमें डर लगता है वो कुछ ना करे, उनको भी हमारे सोसाइटी में आकर ऐसा ही फील होता होगा. कहीं ना कहीं वो चीज़, ये जो बाउंड्री है हम लोगों ने खुद ने बनाया है, हम इंसानों ने. ये नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा कुछ होता नहीं, आज हम भी एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं. आई थिंक अभी हम इस टाइम पे है जहाँ पे सब आज के टाइम पे हम सब एक्सेप्ट कर रहे हैं ये चीज़ें. तो मुझे ऐसा लगता है कि कई साल बाद ये सारे बाउंड्रीज खत्म हो जाएंगे. So I have done a small research about it. Not small, I have did a huge research. Small तो मैंने ऐसे इधर मैंने just mention किया. Just a simple 1-2 paragraph about them, how they have come to this. अगर आपने रामायण महाभारत पढ़ा होगा तो then you will understand. अर्धनारीश्वरा, very important thing. हम सब जानते हैं, तो वो सब चीज़ें कैसे रिलेट होती है और कैसे हम उनके बारे में जान सकते हैं. From there you will know how they help Rama. And their roles, about how Guru Ma treat them, how there are so many chelas are there, there are also hierarchy in them. So I have gone through about that. That also. You can see the slide. Yeah, abstract में हमने ये समझाया था कि we have to keep aside this gender, this class, caste discrimination and all. We have to keep aside that. We have to be always keep humanity. Be kind, be honest to ourselves and to everyone in this society. अगर humanity नहीं रहा तो हम कहाँ जिएंगे फिर, कहाँ रहेंगे? We have to believe people, believe yourself, and
love each other. You have to care each other. You have to spread love. Nothing about that. Everyone has seen. We should like go through with it, Yes. and we should like accept this, and we should respect each and everyone. The thing is, we have to accept them. If they are accepting us, then we have to accept them as well, because they are human. So this was my thesis statement. I'll read out for you guys. Like, I see a fashion as a device for identity formation, as a way to negotiate your way into society. I believe that the world should be safe and respectful place for all, and my thesis will be dedicated to the Hijra community, the third gender, and I will fashion a new identity, a new visual code for them. So this is very clear to all of you. Like, So it's clearly written that our thesis will be dedicated to them, and we'll fashion and we'll create a new identity to them. so yeah guys, after doing all this, like after taking interviews and all that, like this was my like personal stuff which I have been there. I have listening them like thoroughly, not with like one trans, like each and every one, like lagbhag 10 nahi to 15 जिनको मैं मिला, and they all were like saying this, but the main twist which have just came in this research, after researching and all that, I have read so many what should I say, like articles and all that, and tech talks as well, not like only research, tech talks videos मैंने बहुत सारे देखे and all. Everywhere like Hijra said that कि people are like not helping us, they are like pulling us back, they are not giving us that opportunity, That that respect. the respect Yes. are somewhere lost in some of society or something like that. But there are some people, there are some transgender who just said like totally opposite. Like I feel like it's very close to each other. But it's a personal point of view as well. Ki as a human, what we think. There are 50 to 60%. They're not 50. There are 70% people who really respect them, who really love them. They don't have any problem to stay, stay as a neighborhood or stay with them in a same building. Yeah. There are only 30% of people who don't like them or back bitching or doing all these things. तो ये जो 70% people है, उसमें से हम भी आते हैं कहीं ना कहीं, who always wanted them to Grow. कहीं ना कहीं वो ग्रो करे और लाइफ में आगे बढ़े या कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, या तो why always they think कि हमें वो अपॉर्चुनिटी या वो रेस्पेक्ट हम सोसाइटी नहीं दे रहे हैं. Yeah, Why they can't come Forward. for themselves and stand for themselves कि आए कुछ यूनिक करे. आज हम भी अगर जॉब पे जाते हैं, there are 50 people, we are standing 50 of them, और उसमें से कहीं ना कहीं 5 बेस्ट होता है, उसके बाद सब एवरेज निकलते हैं. कोई everyone is not same. But all So- those 50 people are working for that, Yeah. be on that place. For getting that place. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसा लगता है रिसर्च वर्क से कि ये जो हिजरा कम्युनिटी है, ये उन्होंने एक थिंकिंग बना रखी है. तो उसमें से कहीं मतलब कि अगर 50% ऑफ ट्रांसजेंडर्स आर देयर, उसमें से कहीं 20% ऑफ पीपल आर देयर कि उनको ना मेहनत करके कुछ चाहिए. देयर आर ट्रांसजेंडर, यहाँ पे हम नेक्स्ट आपको स्लाइड्स में दिखाएंगे, जिन्होंने अपने लिए खुद स्टैंड लिया है, और वो आज कहीं ना कहीं उनको वो रिस्पेक्ट मिली, वो नाम मिला, वो पैसे शोहरत मिली, because that's the thing, guys. Everything is If you there. want to earn something, you have to come up out of box. Because for an like best example, you can see a Pooja Sharma Rekha. Like she have made her own Yeah. identity. Anjali Lama, she's from like fashion, like Fashion if you industry. guys have seen so many fashion blogs and all that. Anjali Lama is really famous fashion model, you can see, and she's very successful in this industry.
and even you can see her articles, see what her perspective it is. Like not just like this two trans, there are so many other trans as well. They just like fought for themselves and they just grabbed that particular place, and now they are like गर्व से हम लोग बोल सकते हैं कि yeah, because that day we have break that monotony and we have come out that we have come and this place and we are standing. And I think this thing what we are talking about, और हम जो ये सब बोल रहे हैं या सोच रहे हैं, ये सबके लिए लागू है बॉस. अगर हम दोनों हैं, अगर हम कहीं गए हैं कंपटीशन में, obviously even he have to do something out of the box, even I have to do something out Then of the only we box. can. They and that judge will decide whether who is best. Obviously, तो मेहनत तो सबको करनी है. Lastly, इट्स अप टू यू कि आपने क्या किया जो आई कैचिंग है. फिर रिस्पेक्ट हम दे रहे नहीं दे रहे, वो बात की बात है. इवन पूजा शर्मा रेखा हु केम आउट ऑफ यू नो दैट कम्युनिटी, और उन्होंने ट्रेन में डांस किया, इधर डांस किया, उधर डांस किया, एंड शी नाउ एवरीवन नोज हु इज शी, और वी रिस्पेक्ट हर. Obviously we respect her, we talk to her personally and we respect her what she did. और उन्होंने out of the box किया और सब ने उन्हें पहचाना और सब ने उन्हें प्यार दिया. She came at Colors TV. So I personally think it's about your own thinking and own personality और own capability कि आप अपने आप को कैसे दर्शाते हो लोगों के पास, और आप किस तरह से अपने आप को कैपेबिलिटी आप दिखा सकते हो ताकि आप फेमस हो या जो भी करना, आपको जो भी बनना है, ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर और पोटेंशियलिटी के ऊपर डिपेंड होता है. इट्स वंस ओन इंडिविजुअल क्या थिंकिंग, नथिंग एल्स. चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, फीमेल हो, मेल हो या कोई भी जेंडर हो, इट्स हिज और हर ओन इंडिविजुअल थिंकिंग कि कैसे वो अपने आप को दर्शाए या अपने आप को दिखाए, ताकि और कितना वो हार्ड वर्क करे. It's like after that I have taken a public point of view. What people think about that. So it's like part of my research work only. So this is how we did my research work, because as you know guys, आप thesis work कर रहे हो, but it should be like very much attractive and very much like कि productive भी रहे. Like आप अपना thesis work किए, like it should be something creativity on your thesis as well. आप ऐसे ही मत करें कि हाँ research किया, हाँ आपने दिखाया कि हाँ this is my research and this. No guys, it should have some like connectivity with each other. Like this will, like you can see this slide and you can relate what people can think, and even the faculty will also like this stuff as well. Yes. So this is also like because strategy. People love when you do interviews with public. If you think कि अगर आपकी thinking कुछ रही और आपको ऐसा लगता है कि आपकी thinking सबसे अलग है तो नहीं है, you should ask others as well कि आपका point of view क्या है, इसमें क्या है, कि आपकी thought और उनकी thought मिल रही है. Guys, my question was like whether it is time to change our mindset or it is time to change the mindset of transgender, like who is not standing for themselves and happy with who they are living. Yeah. So it was very clear कि हमारा question एकदम सही था कि obviously they are getting everything. They had legalized, मतलब कि government have Supreme Court has given a legal permission to them what they want to do. And they get everything, they are getting everything. तो ये कहीं ना कहीं हमारा mindset change होना चाहिए या उनका mindset change करने का time आ गया है कि भाई आप लोगों को ये मिल रहा है, but then also you are saying कि we are not getting this things. Why you all are complaining about it? It's time to give your best. Stand for yourself, stand for your own selves, and we'll help you. That's the thing. Yeah, you have to stand for finally you have to stand for yourselves, and we'll help you and we'll support you for that. Obviously आज पूजा शर्मा रेखा doing this things, and we are supporting her and giving her all respect. Yeah, all respect what she deserves to. So yeah guys, like this was my question, and I just want to say कि और we are just ending this research part in a half of it because ये video बहुत लंबा हो जाएगा, and I know
कि वी आर डूइंग बक बक एंड ऑल दैट स्टफ एंड आपके सबके ऊपर से ज़्यादा रहेगा. बट नो गाइस, इफ़ यू जस्ट गो थ्रू इट लाइक fourth year student बोलो या first year student बोलो and But who I have think- this interest about it. बट आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट जहाँ पे आप इतना रिसर्च करते हो ना, और आपको ये भी करना बोलना है, ये भी वो भी बोलना है and बोलना everything. है ना. बहुत सारे पॉइंट्स में हम लोगों ने रिसर्च किया है, बोल रहे हैं, इतना टाइम स्पेंड किया है. तो हम इतने छोटे से वीडियो में ऑब्वियसली एंड नहीं करना चाहते, लंबा भी नहीं करना चाहते, बट एंड भी जल्दी से नहीं करना चाहिए. So we'll continue on this on our next video. So Yes. guys, like just stay tuned and just comment us below हमारा topic कैसा लगा and हमारा research कैसा लगा, because research is the only main thing. Yes, and one main point, and I really want to say कि please don't get hurt if we are hurting someone. If we are hurting some transgender or anyone, any class or caste, anyone, Gender. any gender, because we don't want to, discourage them. We want to encourage them. We want to tell them कि please stand for yourself. We are there to support you. You are there to support us what we are doing. Please do support us. अभी We सब मत always बोल say. दे, second half बाकी है. Yes. So guys, just stay Please tuned don't get hurt for that. Yeah. And just stay connected क्योंकि that is the main part Yes. that where we gonna disclose Yeah. our like second part of research, and you will get to know कि हमारा research कहाँ पे end किया है and where we have started our further research on our developments and all that. So yeah guys, just stay tuned, this is gonna be a blast. So I have created this in a episode wise, so just stay connected and just stay tuned for all the videos. So yeah guys. Yes, and lastly, please do support Kuasha.official. Yeah, and just don't forget to subscribe guys, please. Love you, bye, see ya.